Good morning to all the dear students. Today I am going to explain the revision work of SST for periodic test 4th. सिलेबस देखते हैं. देखिए, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 एंड 9 आएगा एंड चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी में, चैप्टर नंबर 7 कन्फ्रंटिंग द मार्जिनलाइजेशन ये चैप्टर नंबर 4 सिविक्स से पूछा जाएगा. चैप्टर नंबर 8 एजुकेटिंग द नेशन, चैप्टर नंबर 8 है एजुकेटिंग द नेशन. एक्सरसाइजेस देखते हैं. एमसीक्यूज. द बनारस संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1791 बाई ऑप्शन नंबर डी जोनाथन डंकन. सेकेंड, द ओरिएंटलिस्ट वांटेड टू प्रमोट इंडियन एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. आपके पास ऑप्शन ब्रिटिश, यूरोपियन, इंडियन एंड वेस्टर्न, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. थर्ड, द लॉर्ड थॉमस मैकाले सा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एज एन uncivilized country that needed to be civilized. Fourth number, as a member of executive council, Macaulay presented his famous minute and education policy in February 1835. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. फिफ्थ में देखिए, आप केवल जो ऑप्शन करेक्ट है वही मैं बताता चल रहा हूँ. फिफ्थ नंबर, द गवर्नमेंट ऑफ विलियम बेंटिंक एक्सेप्टेड द व्यू पॉइंट ऑफ मैकाले ऑन 7 March 1835. Next, question number 6, an education dispatch issued by the Charles Wood was sent by the directors of English East India Company in London to the Governor General of India in 1854. Seventh number, dash, English was recommended at the medium of expression for the higher studies, option number C is correct. Eighth, after 1854 the company decided to improve the system of vernacular education. Next, the idea of National Council of Education was proposed on 16 November 1905. In 1901, Rabindranath Tagore started school at Santiniketan. Next है true false. The Orientalist wanted to promote Indian education through the medium of English language. False. Second, the Anglicist believed that the Eastern knowledge has an unscientific base and thought. This is also true. Sorry, this is true. Third, James Mill agreed the Orientalist and emphasized on the imparting education. This is false. Fourth, the Macaulay presented his famous minute on the educational policy in February 1835. तो ये ट्रू है. फिफ्थ देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ विलियम बेंटिंक एक्सेप्टेड द व्यू पॉइंट ऑफ मैकाले ऑन 7 March 1835. ट्रू. Emphasis was given to female and vocational education in Wood's dispatch. True. Aurobindo Ghosh pledged 1 lakh rupees to the National University of Bengal. False. Mahatma Gandhi was in favor of Western education. False. देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग. First, Calcutta Madras were established by the Warren Hastings. Sorry, Calcutta Madrasa was established by Warren Hastings. Second, Sanskrit College was established by Jonathan Duncan. Orientalist promoted Indian education through the medium of classical language. Fourth, Anglicist promoted Western learning through the medium of. Fifth, Wood's Dispatch, an educational dispatch issued by the Charles Wood. नई तालीम, न्यू एजुकेशन प्रोग्राम. पथ भावना, एग्जैक्ट पाठ भावना. सेवेंथ इज रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ स्कूल. चैप्टर नंबर 9, विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म. Brahman and Kshatriyas are considered themselves as upper castes. Option number D is correct. The 18th century in Europe was a period of enlightenment. Third,
Raja Ram Mohan Roy founded the reform association known as Brahmo Samaj in Calcutta. Fourth, effort led to the passing of Hindu Widow Remarriage Act in 1856, which permitted the widow to remarriage. Ishwar Chand Vidyasagar. Option number A is correct. Fifth, Pandit Ramabai established Mukti Sadan in 1889 as a refuge for the young widows who were abused by their families. Sixth, Naroji Ferdinand began religious reform association to modernize Parsi custom relating to the women's education and marriage. Next one is question number 7. The Kandukuri Visras Lingam was known as the Vidyasagar of the southern India. Option number D is correct. Eighth number, according to the Child Marriage Restraint Act, no man below the 18 was women below 18 एज ऑफ, देखिए इसमें 14, यानी आदमियों के लिए 18 था, विमेन के लिए 14 ईयर्स के पहले शादी नहीं कर सकते थे. विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्णा मिशन बेलूर नियर कोलकाता. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 10 नंबर, सावित्री बाई द फर्स्ट वुमेन टीचर इन मॉडर्न महाराष्ट्र विद द हस्बैंड ओपन 5 स्कूल्स फॉर द गर्ल्स. देखिए फर्स्ट में ह्यूमैनिज्म एंड लिबरलिज्म, सेकेंड में सती, थर्ड में विडोज, फोर्थ में कंडकुरी वीरासलिंगम, फिफ्थ में बुद्धिस्ट टेक्स्ट. सिक्स्थ रामकृष्ण परमहंस. सेवेंथ अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन महर फैमिली. डॉक्टर अम्बेडकर वांटेड टू एंड अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द. फॉल्स देखते हैं. फर्स्ट इज ट्रू. राजा राम मोहन राय वॉज बॉर्न इन ऑर्थोडॉक्स फैमिली इन 1772. दिस इज ट्रू. इन 90th century. सेकेंड नंबर, the condition of widows was pitiable. True. Pandita Ramabai spoke against the practice of child remarriage. This is true. Annie Besant and the Theosophical Society played a significant role in the field of women education in Madras. This is true. Next, fifth, the earliest to take up Western education were the Bengalis. False. Vidyasagar finally secured the age of consent act in 1891. False. Jyotiba Phule founded Arya Samaj to spread caste inequality. False. Ambedkar spent his life fighting to give the Dalits their rights. This is true. Match the following. Father of modern India, Raja Ram Mohan Roy. Hindu Widow Remarriage Act 1856, Ishwar Chandra Vidyasagar. Third, Mukti Sadan, Pandita Ramabai. Fourth, Arya Samaj, Swami Dayanand Saraswati. Vidyasagar of Southern India, Kandukuri Visraslingam. Sixth, Ramakrishna Mission, Vivekanand. Satyasodhak Samaj. Seventh, Savitri Bai Phule. चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का, इंडस्ट्रीज. देखते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर. सेकेंड, आयरन मेड from iron ore is product of mineral based industry. Third, TISCO started pig iron production in 1911 and steel in 1912. Option B is correct. The first steel ingot was manufactured in 16th February 1912. Fifth, during the First World War, TISCO was made rapid progress. Sixth, Pittsburgh is also known as the Iron City and City of Bridges. Seventh, limestone was available locally at Pittsburgh and from the Birmingham, Alabama. Option number A is correct. Very fine fabric was manufactured by the handlooms by the Indian weavers. Option number A is correct. 9, the first cotton textile mill was established in Ahmedabad in 1859. 10th, several textile mills in Ahmedabad are languishing. Option number B is correct. अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स. ह्यूमंस, फर्स्ट में ह्यूमन, सेकेंड में पावर्टी, थर्ड में हैवी एंड बल्की, फोर्थ में आउटपुट, फिफ्थ में ब्लास्ट फर्नेस, सिक्स्थ में पिट्सबर्ग, सेवेंथ में क्लाइमेट, एट्थ में टेक्सटाइल, नाइन्थ में हैंडलूम्स और 10th में इंडस्ट्रियल सिस्टम. फिर देखते हैं ट्रू फॉल्स. फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू. मिला लीजिएगा.
फिर स्टील मेड ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर इज प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दिस इज फॉल्स. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, ट्रू. लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द न्यू पीपल, फॉल्स. An industrial system consists of input processing and output, true. Tisco started pig iron production in 1911 and 1912, true. Iron ore is usually smelted in blast furnace, true. सॉरी ये फॉल्स है. नेक्स्ट देखिए, वेरी फाइन फैब्रिक वॉज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द हैंडलूम बाई इंडियन वीवर, ट्रू. द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज established in Ahmedabad 1859, true. The limestone was available locally in Pittsburgh from the Birmingham in Alabama, true. इसको आप मिला लीजिए 5, 4, 2, 3, 1, 6. Chapter number 7 of civics is confronting marginalization. Confronting marginalization. First में constitution is correct. Second में Parsis. Third में citizen. Fourth में Dalits. Fifth में 1889. ये आप मिला लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा. Suitable words आपको fill in the blanks में रखना है. Relentless legislation. Untouchability second में. Scavenging third में. फोर्थ में दलित्स एंड ट्राइबल्स, फिफ्थ में कॉन्स्टिट्यूशनल. टेक द करेक्ट ऑप्शन भी देख लीजिए. फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड में पारसीज, थर्ड में सिटीजन्स, फोर्थ में दलित्स, फिफ्थ में 1989. ट्रू फॉल्स देखिए, फर्स्ट ट्रू है, लास्ट ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स हैं. गवर्नमेंट लॉज प्रोटेक्ट its citizens, true. Scheduled caste and tribal group do not face any discrimination in an everyday sense, false. Article 18 also state no one can prevent scheduled caste from the educating and using public facilities, false. Another degrading practice of reinforces untouchability is that of manual scavenging, this is true. देखिए 3, 5, 1, 2, 4. Manual scavenging means reinforcing untouchability. Second is scheduled caste and tribal groups face discrimination in everyday sense. Third, scheduled caste avail the benefit of reservation. Fourth, the scheduled caste and scheduled tribes act enacted in 1889. Fundamental rights means important part of constitution. इसी के साथ आपका रिवीजन वर्क कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.